question number 18. And what does it say? Equation of the straight line which meets the circle at 2 points, where these points are at a distance of 2 from the point. Okay, this is some circle, there is some point A 2,2, यहाँ से 2 कोर्स ड्रॉ की जाती है और उनकी लेंथ सेम है 2. ठीक है, they meet the circle at point where 2 points, let us say P and Q. ठीक है, so PQ की इक्वेशन हमें पूछी. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which meets the circle at 2 points where these points are at a distance of 2 from. Okay, so we are asked कि जो ये PQ है, okay, ये जो लाइन PQ है इसकी इक्वेशन हमें पूछा है. Okay, this distance is 2, this is 2, that makes this triangle isosceles, and we can draw a circle like this from here with center at A. Then this will become radius. 2 and 2 इक्वल है, so ऐसा सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं. एंड इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? बेसिकली x minus 2 plus y minus 2 square equals to radius is 2. Simple. This circle and this the whole circle, they are intersecting at P and Q. So basically intersection of two circles is resulting in the chord PQ. So x square plus y square equals to 8. If we minus the equation 1, if we do equation 1 minus equation 2, we'll get the equation of line. Let's say x minus 2 square minus x square plus y minus 2 square minus y square equals to 4 minus 8. So this is x square minus 4x plus 4 minus 4y plus 4 is equals to minus 4. So this is 4x plus 4y equals to, oh no, this is 8, 12, this is 12. So this is x plus y equals to 3. So B is the answer. अच्छा क्वेश्चन है, not simple application, but we have to think कि ये दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, then it will be easy to find P and Q. Okay, so next question is the standard deviation. तो simply हो x1, x2, x3, x4, xn are n observations such that summation of xi square is given as 400 I is n, and summation of xi is given as 100, again I is n. And the possible values of m among the following. Okay, so variation sigma square होता है, that can at most be 0, it can never be negative. ठीक है, basically square है. So we know that sigma square is nothing but summation xi square divided by n minus summation xi by n का whole square. This is the formula. So this should be greater than equals to 0. Summation xi square is 400 divided by n minus summation xi is 100 divided by n का whole square is greater than 0. So 400 by n is greater than equals to 1 double n square. So n cancel out. So n should be greater than this divided by 400. That is 25. So n has to be greater than equals to 25. So only T is the answer. Okay. Simple application of variance formula. Let us move to the next question. The system of equation has infinitely many solutions. Okay. So इसमें तो calculations होनी है. Okay. X minus 2y plus 5z equals to 3. 2x minus y plus z equals to 1.
11x minus 7y plus pz equals to q. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है इसके. सो वी नो कि इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी. 1 minus 2 5 2 minus 1 1 11 minus 7 3. और इसकी जो कांस्टेंट पार्ट है वो क्या है 3 1 and q. So let's make this full matrix. This matrix is known as augmented matrix. Okay. Now this is 4 cross 3 cross 4 matrix. It will have infinite solution only when. Okay, इसकी रैंक क्या होगी. किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो होगी उसके जो ऑर्डर है उसमें जो मिनिमम वैल्यू उससे कम होगी. सो इसकी रैंक विल बी लेस देन इक्वल्स टू 3. अगर इसकी रैंक 3 हो गई देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, हमें चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन. दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इसकी रैंक जो है वो लेस देन 3 हो. मींस इसकी रैंक 2 हो जाए. मींस जब रैंक 2 होगी दैट विल बेसिकली दैट इज लाइक सेइंग कि देयर आर 2 इक्वेशन in 3 unknown, then there will be infinite solution. Okay, so let us simplify it. This is 1 minus 2 5 3. now I will convert in echelon form. Echelon form means यहाँ पे जो 1 के नीचे जितने भी elements है will make them 0. so if we operate this r2 is equals to r2 minus 2 r1, if we apply this operation then this term will become 0 and this is 3 and this is minus 9. multiply करते हैं 2 से 10. 1 minus 10 is 9. here also 1 minus 6 is minus 5. again let us apply r3 is equals to r3 minus 11 r1. so this will be 0. minus 7 plus 22. minus 7 plus 22 is 15. this is 15. that is p minus 55. okay, again here q minus 33. now we have to make this element also 0. 1 minus 2 5 3 0 3 minus 9 minus 5 0. now इसको 0 करना है. so this has to multiply by 5 means r3 is equals to r3 minus 5 r2. so this will become 0 and this becomes p minus 55 plus 45 q minus 33. we are doing minus 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करिए माइनस कर रहे हैं प्लस 25. so this is nothing but 1 minus 2 5 0 3 minus 9 0 0 p minus 10. this is 3 minus 5 and this is q minus 33 25 basically 8 q minus 8. okay, अब हमें इस मैट्रिक्स की रैंक को 2 करना है. दैट इज ओनली व्हेन पॉसिबल इफ वी मेक q minus 8 0. दिस टर्म 0. अगर दिस टर्म 0 देन स्टिल इट विल हैव रैंक 3 क्योंकि ये नॉन जीरो. so we have to make p minus 10 also 0. so when these two term 0 this full row will become 0. तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी. from here we get q equals to 8 p equals to 10. now c which p plus q is 18. so this is not true. p plus q is 18 not true. p minus q is 2 2. so c is the answer. I will sign over. इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से करना आसान रहता है rather than the other Cramer's rule. उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. okay, so let us see next question. okay, term is randomly chosen from the expansion if the probability that it is rational number term is b then okay. so basically हमें इसमें रेशनल टर्म देखना है. tr plus 1 क्या होता है ncr
first part 20 minus r, second part 5 power 1 by 4 into r. ठीक है, so this can be written at 20 cr 4 20 minus r by 6. Okay, and this is 5 r by 4. This has to be a rational number. रेशनल नंबर ये कब पॉसिबल है, जब ये चीज़ इंटीजर हो, मीन्स 20 माइनस आर बाई 6 भी इंटीजर हो एंड आर बाई 4 भी इंटीजर हो. आर बाई 4 इंटीजर कब होगा, जब आर वैल्यू मल्टीपल हो 4 4 8 12 16 20 20, तो इट मेक्स आर. अब इनमें से वी इफ वी फाइंड 20 माइनस आर, so this will be 20 16 20 minus 8 is 12 8 4 and 0. इनमें से which one is divisible by 6, then only we'll have this part integer. This is not divisible by 6, this is not divisible by 6, not divisible by 6. So only this 0 is divisible by 6, so we have only possible value of this and this. These are corresponding to r equals to 8 and 20. So there are only two terms, T9 and T21, where the expansion mean the expansion which are rational. So हमारे पास जो desired आउटपुट है 2 पे पॉसिबल है एंड टोटल इसमें टोटल टर्म कितने हैं 20 n + 1 होते हैं एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन टर्म. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 डिवाइड बाई 20. वी आर आस्किंग फॉर 20 इंटू p क्या होगा, इट इज 20 इंटू 2, so 40 is the answer. Okay, simple application of probability. Let's see next question. Question 22. If a tangent of slope 2 of the ellipse passes through the point, then the value of, okay, simple. If our ellipse is x square by a square, y square by square equals to 1, then its tangent is nothing but y equals to mx plus minus a square m square plus b square. Here m is given as 2 and b square is given as 1, and this tangent passes to minus 2 comma 0. So minus 2 comma 0 minus 2 m is 2 plus minus a square m is 2 ka square plus b square is 1. So basically this is minus 4 equals to plus minus 2, 4a square plus 1, इसको square कर दो, 16 equals to 4a square plus 1, so 4a square equals to 15, so a square equals to 15 by, so 15 by 4 is the answer, which can be written as 3.75. Okay, let's see next question. तो बहुत आसान क्वेश्चन था. Question 23. The number obtained after dividing the number found by the last 3 digit of this. इसका last 3 digit. Okay, जब भी हमें किसी भी नंबर का last 3 digit चाहिए तो भी ट्राई कि जो हमारा इनसाइड नंबर है वो इस फॉर्म में रहे. तो इसलिए क्योंकि 10 रहेगा उसमें, तो इट विल बी इजी टू एक्सक्लूड टू फाइंड द लास्ट नंबर. क्योंकि अगर किसी के एंड में 10 है, ठीक है, मीन्स हर टर्म के आगे 10 आ रहा है, सो उसका फर्स्ट डिजिट 0 उतना होगा. मान लो फिर 7 है, तो इट विल बी इजी टू एड दैट पे. सो हमें इस फॉर्मेट में इसको लाना है. 17 को 10 + 7 पर हमें तो 1 चाहिए, तो लेट अस से 17 स्क्वायर इज 289. दिस कैन बी रिटन एज 290 minus 1. So 17 square 128. Okay, that is 289 power 128. This can be written as 1 minus 290 power 128. That is 1 minus 128 C1 128 into 290 plus 128 C2 into 290 का स्क्वायर प्लस 128 C3 माइनस 290 का क्यूब एंड सो ऑन. इसका चल रहा है. सो दिस विल बी लाइक
1 minus 128 into 290 plus 64 into 127 into 29 का स्क्वायर into 100 माइनस, ठीक है। नाउ इसके लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे? 128 into 290 098 72 18 plus 75 95 14 into 56 2 0 2 120। सो फर्स्ट का लास्ट डिजिट तो 1 ही है, 001 लिख सकते हैं 120। अब इसके लास्ट 3 डिजिट देखने, उसके बाद हम क्यों देखेंगे, क्योंकि अब इसके बाद 10 की पावर 3 आएगा, सो उनके लास्ट 3 डिजिट सबके 0 ही होंगे। सो इवन वी एड अप दोस लास्ट 3 डिजिट, तो उससे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस अब इसके लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, सो इसका 100, ठीक है। लास्ट 2 तो 0 हो गए और 3 देखना है हमें, तो इसमें अगर वो जो भी नंबर यहाँ आएगा, लेट अस से 256 जो भी आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देट विल बी दैट्स व्हाट। सो बेसिकली ये जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इस टर्म्स को, इसका जो एंड में जो डिजिट होगा वही थर्ड डिजिट होगा इसमें। सो 64 इंटू 127 इंटू 29 का स्क्वायर, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वही यहाँ का थर्ड डिजिट आ जाएगा तीसरे में जो है। सो इसका लास्ट क्या आएगा, इससे 4 इंटू 7 9 9 18 1, सो 8 दैट विल बी 8। तो इसमें 800 हो गया इसका लास्ट डिजिट, ठीक है। सो 800 माइनस 120 प्लस 1, सो माइनस 119, ये कितना 1, 9 minus 1 is 8, 681. So 681 is the last 3 digit of this. When this is divided by 100, it will be 6.81 answer. Okay, simple है। Plus this is important also. This is a typical question, ठीक है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, then what will be our aim? Our aim will be that this term is converted in the form 1 plus 10x, ठीक है। Then जो भी पावर यहाँ पे put the 10x on it binomially। उसके बाद सी दैट इफ लास्ट के 4 डिजिट पूछ रहा है, जैसे मान लो, तो जैसे 10 क्यूब हुआ उसके बाद 10 4 आता है, उसके इसके आगे सारे टर्म एक्सक्लूड हो जाएंगे, बिकॉज लास्ट के 4 जितने भी टर्म आगे आएंगे उनमें 0 रहेगा। सो दे वोंट अफेक्ट यहाँ पे जो भी इससे जो नंबर आएगा, इफ इवन वी एड लास्ट 4 डिजिट तो अनचेंज रहेगा। इधर के जितने भी नंबर्स है उनसे वी कैन फाइंड द फोर डिजिट, देयर विल बी आवर आंसर। And that way this can be generalized in many ways। Okay, so let us take next question। Okay, the area bounded by y equals to 2 minus modulus x minus 2 and x-axis। Okay, so this is y minus 2 modulus x minus 2 ये given है। पहले तो इस मॉडुलस को हटाओ यहाँ से। if x is less than, simple, less than equals to 2, then this will be 2 minus x plus 2, that is 4 minus x। when x is greater than equals to 2, तो ये क्या हो जाएगा, नो तो प्लस हो जाएगा ना, x minus 2 तो ये प्लस हो जाएगा, so this will be x। ओके, और when x greater than 2 ये ऐसे ही रहेगा, 2 minus x minus 2, this is 4 minus x। so इसको प्लॉट कर दो, this is 2, x लेस देन 2 के लिए y इक्वल्स टू x ग्राफ है, सो 2 पे वैल्यू 2 होगी, x इक्वल्स 2 पे इसकी वैल्यू भी 2 है, सो दिस इज कंटीन्यूअस फंक्शन 4 minus x। सो व्हेन y 0 कब होगा, जब 4 होगा x, एंड इसके बाद में ये एक लाइन है इसके पास, ये एरिया में पूछा है, x एक्सिस है, ये तो ट्रायंगल है। सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इनटू लेंथ ऑफ बेस, बेस इज 4 एंड हाइट इज दिस इज 2, सो आंसर इज 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। Let's take next question and the final one। Okay, if y is this cubic,
Then x-intercept of the tangent to this curve. Okay, the curve is this: x cube minus 6x square plus 9x plus 1 equals to 0. Okay, इस curve पे we are drawing a tangent. Okay, ये x intercept tangent उसका whose slope is least. Okay, इस tangent की slope least है. First we have to find a tangent on this curve whose slope is least, and we are able to find the tangent. Then it is easy for us to find x intercept. Okay, let us take this is the tangent. Then x intercept क्या होगा? This part. When y equals to 0, जो x आएगा that will be x intercept. Okay, so our aim is to find the tangent of this which has least m. So what is इसकी slope क्या है? dy by dx is 3x square minus 12x plus 9. Okay, so let us take 3 common. So this is x square minus 4x plus 3. This can be written as x minus 2 whole square. Okay, minus 1. That is 3x minus 2 square minus 3. This is dy by dx. इसको लिस्ट करना है हमें. इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी? लिस्ट वैल्यू तभी मीन्स लिस्ट क्या होगा जब ये 0 होगा. मीन्स x when x is 2 then dy by dx will be least. ओके, क्योंकि 0 से छोटा तो हो नहीं सकता because this is square. So x equals to 2 लेते हैं, then dy by dx will be minus 3. ठीक है, and it will pass through which point? When x is equals to 2, so y is equals to 8 minus 6 into 4 plus 18 plus 1. This is 18 minus 24 plus 19. So this is 18 minus 5. It is 3. So this passes through 2, 3. So we now what we have to find the equation of a line which has slope minus 3 and which passes through 2, 3. This is that line. X intercept कब होगा? जब y 0 होगा. So put y 0 minus 3 x minus 2. From here we can say x minus 2 equals to 1, so x equals to 3. So answer is the 3. Okay, so this ends this paper.